ये तो क्या जीन दे बदतमीजी दी। है यार। क्या बदतमीजी है? What? बाकी एक सौ जीबी। ओके भाई। अबे सुन सुन, इसको कैंसिल करो। लोकेट इतने तूने डाउनलोड कर रखा है? अरे बच्चा, ओ माय अबे गुडनेस। सुन सुन, इसको कैंसिल कर एक बार। कैंसल बंद कर इसको, बंद कर, बंद कर, बंद कर। अबे लोकेशंस पे जा, इसको बंद नहीं कर सेटिंग पा रहा सेटिंग क्या कर तू? बंद कर इसको, दे। इसको अबे लॉन्चर बंद कर। ऑन कर एक बार लॉन्चर दोबारा। बढ़िया था गुरु, जो भी था बढ़िया था। रुक जाओ, चालू कर रहा हूँ। कर ऑन ये कर। क्या अबे भाई बवाल सीन है। 8 GB नहीं नहीं, चलती है, सुन, ऊपर सेटिंग पे जा, 8 GB चलती है। अब सेटिंग जा सही हो गया ऊपर। ना? अब सही हो गया, अब आठ सही जीबी हो आठ गया। 8 जीबी GB ठीक है, चला, 8 8 जीबी GB ठीक है। हाँ चलेगा। 8 GB सही है, 8 GB वो सही फाइल। है। 100 GB। 8 GB मेरे हाँ, एक वो दिन में बाद में नहीं होगा। 94 GB का था ना अभी जेंसिन। यार 100 GB भाई, तो क्या हो दिक्कत जाता, देगा भाई एक ही मेरे को, बार तो है। दिक्कत देगा भाई मेरे को। भाई हार्ट अटैक दे दिया था ना उधर। दे दिया था भाई ये वो। ये मर जाता अभी। मैं जो बाहर कितना, था तक 5 बज रहा है ना, 6 बजे तक हो जाना चाहिए था 11 डाउनलोड। बजे 11-12 बजे तक होता है। अच्छा, 6 बजे 30 तक हो MB। जाना चाहिए था। स्पीड कांस्टेंट नहीं ना, तो गिरते रहते। ओके, अभी कितना हो वेबकैम रहा है? यू 24 शो हो रहा अच्छी। भाई मेरे को शियान्युन चाहिए, भाड़ में जाए। मैं नहीं जा रहा ना इधर, चल। छोड़ दे, सब छोड़ दे, कुछ नहीं, मत निकाल। ना भाई गारंटेड है। हाँ तुमने, चलो चलो फिर से सब चैट अपना रिफ्रेश करो, स्टार्ट करो, ठीक है। और सब पहले लाइक करो स्ट्रीम को। मैंने, तुमने हमको जी अबे दोनों सुअर, ये नायरा करती क्या है? ना, या नाहिदा टैगर है। नाहिदा चीजें करती है। इसे फोटो की जितना सामान को खींचेगी वो सामान चुरा सकती है। अपने एनिमीज को ई स्किल पे टैग करती है, लाइक डेंड्रो अप्लाई करती है 25 भाई सेकंड के लिए। चोर है भाई, बोल दिया ना चोर है। एंड बस्ट पे, जब तो उसका बस्ट खोलता है तो उसकी टीम में आप जितना टीम, लाइक 3 होता है एलिमेंट, तो एक पायरो कैरेक्टर है तो अटैक, हम तो दूसरा जानते ही पायरो नहीं थे। तो अटैक, ठीक है। डैमेज बोनस मिलेगा पायरो पे। अच्छा डेंट्रो डैमेज होता है तो डैमेज बोनस हो जाएगा 2 पायरो पे, ज़्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रो पे उसका अल्ट का जो टाइम है उसका हाँ। इंटरवल डिक्रीज होता है, और सारे प्लेयर्स का जब अल्ट खुलता है तो ई स्किल का टाइम डिक्रीज हो जाता है। एंड अल्ट मार के, और रेडन का, सॉरी, नाहिदा का अल्ट के अंदर जितना भी अल्ट खुलता है उनका ड्यूरेशन रेडन बढ़ता है। क्या होता यस है यस जितने भी अल्ट खुलते रेडन हैं? अल्ट पे ड्यूरेशन बढ़ता है टाइम से, जैसे नॉर्मल अच्छा। डबल हाइड्रो पे बढ़ता है ना रेजोनेंस पे, हाँ। तो इस पे और ज़्यादा बढ़ता है, लाइक 8 सेकंड का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ओए जो बहुत कि हो गया बे। इनसेन है। 8 सेकंड मायने रखता है, एक दूसरा रन को बचा सकता है होने से। बे 8 सेकंड में आधी एनर्जी वापस आ जाती। मतलब बस्ट खोलते से सोच ले, 4 की जगह तू 2 ही बस्ट में गेम खत्म कर सकता है सबकी। ये भी इसकी तो फाड़ देती है बस। अच्छा, 8 फोड़ ले यार, मैं दुख में हूँ क्यों। नायदा ओनली 10 फुल्स, हट हट छी। ओनली 10 फुल तो मैं नाहिदा 100 निकल गया है, GB बैन देख मारो अबे के भाई। मेरी फट लैग गई हुआ ना थी। इसका और निकल गई। 100 GB देख के मेरी फट गई थी, कट ठीक है। गया मेरा, क्यों, नाहिदा के साथ क्या हुआ। अभी तक नहीं कटा। अबे देखो, पता है मेरे साथ क्या हुआ अभी? मेरी ना पहले वो निकली जीन, ठीक है, C3 जीन हो गई। फिर मैंने ओ फक। तेरी सुन सुन, C3 चीची, 2-3 ओहो। पुल और किए, मेरी नायरा निकल गई। अर्ली, हाँ। कोई नहीं, अभी भी टाइम है यार बैन किंग। मारो भाई। ये बार टाइम, लाइक गेम ने बहुत टाइम दिया है, तो ये कर बस मुझे सकते हो। फुदीना चाहिए, फिर सारे आर्कॉन हो जाएंगे मेरे पास। मेरे को वेंट चाहिए। मेरे को गेम खेलना था पर इसलिए हमने धोखा दे दिया। गेम ही धोखा दे भाई, जेंसिन बहुत धोखेबाज गेम है यार, तुम मानो या ना मानो। 100 GB भाई दिखा के मेरा पैंट बता एक दे। बात बता, अगर वाईटी पे टिकट, जैसे अपनी पूरी जो वाईटी की कम्युनिटी है, जो बंदे ऑडियंस है वो सारी इंडिया की है, ठीक। जेंसिन में कोई बंदा इंडिया का वीडियो नहीं देखता इतना। लाइव स्ट्रीम पे 2-3 बंदे की फोर्स की वजह से अगर टाइम 7-8 मिनट रोशन चल रहा है, और चैनल पे कांस्टेंट 20-30 मिनट की वीडियो अगर कुछ दिन डालते रहूँ, तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नहीं होगा। चैनल पकड़ेगा, डेड हो जाएगा या नहीं वीडियो नहीं पकड़, चलेगा, क्या होगा। वीडियो नहीं चलने वाला, वो वहाँ तक इतनी रीच ही जल्दी नहीं नहीं करवाएगा चलेगा। ना। रीच रीच ही नहीं है, कहाँ से चलेगा। मतलब वो तू खुद अपना व्यूज़ नहीं वो पहुँचने खोल के वाला देख वहाँ ले, तक। वो खुद अपना वो खोल के देख ले, क्या कहते हैं, वो स्टूडियो। देखा है, स्कारा अकाउंट स्टूडियो रिव्यू खोल के देख ले। थोड़ी ए के हो जाएगी। मॉड को बैन मार रहे अपने। उधर तो दे ही रखा है। किसको?
अब God को 20 ban रुपए मार रहे सुपर हैं। चैट फॉर अकाउंट रिव्यू। God को ban हो। चुकंदर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं चुकंदर सही में बना दूंगा। शायद से 30 रुपए किलो बिक जाओगे। 30 रुपए किलो, नाइस कहाँ 40 रुपए है ना, 10 रुपए वैसे भी सस्ता लगा दिया मैं, नाइस। फिर जल्दी बिकेगा ना चुकंदर। कल आदि बोल रहा है कि वो क्या बोलते हैं सैड वाली इमोजी है, वो गुस्से वाली इमोजी है। सैड वाली इमोजी नहीं, वो गुस्से वाली है जो लाल फेस करके आता है, वो गुस्से वाली इमोजी है। मैं भेजता हूँ, इमोजी तो मैं भेजता हूँ। सैड वाली इमोजी ये है जो बंदा आंख से रो रहा है, ये वाला है, ये सैड का हो सकता है, वो गुस्से का होता है। सैड का हो सकता है, रिमेंबर हो सकता वो गुस्से का है और ये सैड का है। इसमें मेरा क्या है? कल पूरा मेरे को स्ट्रीम पे बता रहा है कि नहीं है नहीं है। अल्लाह वही उसको आईडी रिव्यू कर दे उसको। ये आईडी तो आए बंदे की। स्ट्रीम पे बोल रहा है आईडी रिव्यू। ये पहले बीजेएमआई की शॉट डालता था ना तो चलता था अच्छा खासा, अब वापस से वही हरकतें कर। बीजीएमआई पीक था, बीजीएमआई dead डेड है। डेड नहीं नहीं फिर से बढ़ने लग गया, व्यूज आने लग गए हैं। स्ट्रीम देखना है, What the fuck? इंडियन स्ट्रीम देखना। तो एक टाइम पे होता था जैसे जिनका 4 मिलियन है ना यूट्यूबर्स का, मतलब जिनका 4-5 हज़ार की वॉचिंग चल रही, जिनका कांस्टेंट, तो उनका आता था 500 से 1000, एंड वापिस से अब 4-5 हज़ार की हो चुकी है। भाई मेरे को तीन से एक मिनट, अथर अथर तुम मुझे एक चीज बोल, रीजे पागल है क्या? लेट्स गेट नेकेड डेंजी। अरे साला डिग्निका और शॉर्ट डाल दो, मैंने तुम भेजोगे ना वीडियो तो डालूंगा। हाँ मेरा फुल शॉट डाल दो, वीडियो भेजना होता है उसके लिए। वही तो, अब इस डिस्कॉर्ड से रिकॉर्ड करके डालूंगा तो धुंधला वीडियो होगा ना, तो वीडियो क्वालिटी गिरी हुई रहेगी। सब कुछ धुंधला। उसका ना इधर रिव्यू कर दे। डेपुट नहीं था होगा डैम श्योर। मैंने वर्ल्ड में हेल्प कर दो। ओके आता हूँ। वन शॉट में करना है कि थोड़ा सा मजे लेके करना है? 2 टाइप की है ना। मेरी आईडी खोला ना तू शोर, मेरी आईडी खोला है? खोली भी है, 5 पुल बजाई भी है। मार दिए तू? हाँ What the fuck? स्ट्रीम लग देख रहा था। रुक जाता भाई, मैं 10 पुल इकट्ठे मारता कर। कोई नहीं, अभी हो जाएगा 10 पुल इकट्ठा, बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 पुल इकट्ठे मारता मैं। अरे हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। किस पे मारा? मारा किस पे था? नाइदा पे, क्योंकि वही तो चाहिए, ए बैन मार उसको। वही चाहिए। नहीं उसको सियानुन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे काजुआ चाहिए। काजुआ नहीं काजुआ अभी टाइम है, एक बैनर है तो चिंता नहीं। अभी नहीं इनके भाई। पास इतना हेल्थ क्यों है? मुझे काजुआ चाहिए। इतना हेल्थ क्यों है? डरने का नहीं, बहुत टाइम बहुत है यार। हाँ अब डेंड्रो ट्रैवलर यूज करना नहीं ब्रो। अरे यार हार मारने से नहीं होता यार, अभी टाइम बहुत है। नाहिदा तो जस्ट आ जाइए, आज का दिन छोड़ दो गम से उभरने के लिए। कल से डेली के पुल्स जमे करो बस। देखो ट्री लेवल अपना बहुत पुल्स दे देगा तुम्हें, सारे ट्रीज। तो रोगे तो इन शॉर्ट में तुम अपने आप को मतलब धोखा दोगे। तुमने जानबूझ के इसका मतलब छोड़ा ये बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारी आईडी 43 या 44 यार है ब्रो। क्या घिसा है? कुछ नहीं घिसा, बहुत काम है करने को, ट्राई करो। आई नो कि मेहनत करना पड़ेगा, बट रोने से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब लूज़ हो चुका है तो हो चुका है। बहाने होते हैं, धोखा दिया ना। लूज़ करना बहाना होता है कि तुम उसके बाद बैठ के रोने लग गए। हार मानना होता तो मैं भी मान के बैठा होता किधर। देख दिखा मेरी स्क्रीन देखते रहे, अगर ये धोखा दिया। मैं तो 7 दिन में 40 पुल हो गया था। 100 GB वाला। तुमने 7 दिन में 40 पुल करा, मैंने 5 दिन में 83 की पीटी पे निकाल के बैठा हूँ। तो ठीक है इतना तो नहीं करोगे, बट अभी खाली बैठे हो तो करो ना। डेली के 7-8 पुल तो फार्म कर ही लोगे। अगर धोखा मिला मेरे को इसके 100 GB वाला नहीं मिलेगा रे, बस उसकी फाइल की सेटिंग चेंज, मतलब फाइल का लोकेशन पिक कर दे, नहीं मिलेगा फिर। अनजिप हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तुम भी ना प्यार से रोती हो ब्रो। यूआईडी दे रहे हो अपना, जिनका कुछ देखना था। अब चीची यूज करूंगा। रेड नेशनल टीम में नहीं चलता ब्रो, रेड नेशनल में चीची कैसा हो जाएगा? नेशनल का 3 है, सिंचू, बेनेट, शैंगलिन।
और काजुआ हो तो इंटरनेशनल बनता है फिर। AFK गेमिंग करो ना, काय को बुली कर रहे हो खुद को? ये गुस्से में है कि 全部丸見えね姿を残 कैमरा す क्वालिटी इतना 律 गंदा क्यों流 आ रहा है? और लाइट बढ़ानी पड़ेगी इसलिए, रूम में लाइट नहीं है ना। रूम में लाइट नहीं, तेरा बिट रेट बहुत कम है शायद कैमरे। नहीं 60 FPS पे है। उधर तो कम चल रहा है, तेरा स्ट्रीम 60 पे चल रहा है, तेरा कैमरा 30 पे जा रहा है। チョック चेकआउट एक बार सेटिंग रात को देख लूंगा। 呪言手をつなぎましょうほっせめまい इसको मार भी रही है क्या अम्मी को? हाँ, इलेक्ट्रो आई नहीं रोज पड़ेगा। हेलो। हाँ पड़ रहा है, नीचे जाके मार। और इनफैक्ट मेरा ये हट जा रहा है। 律流 पड़ ही नहीं रहा उसको, वही तो बात है, तू जाके मारेगा। कहाँ पड़ रहा है उसको? ये कोई ग्लिच है, ये बग है, मैं उसको ये दे देगा। ये बंदा बग नीचे है। जाके मारो, नीचे जाके मारो। よ अगर तेरे को チョック वर्डिक्ट 15 देना पता नहीं। 全部丸見えね अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं। 知識はあなたには नहीं आ रहा। 律流 गेम ग्लिच में चल चुप। रहा है। छोड़ दो 振動の हाइड्रोम्यून। 権限 वो बड़ी से डैमेज देता है। अरे तो मैक्स लेवल लो ना, ये क्या कम ले रहे हो? यो। मैक्स लेवल पिक करो। हो गया। कैमरा लॉक, कैमरा गॉन ऑन स्टैंड बाय। व्हाट द फक, ऐसे ही मेरे को लग्जरियस चेस्ट मिल गया। वाह, ऐसे नहीं मिलेगा। अबे यार ये तो कैमरा हटा दे, चुकंदर का नाम। बाद में सेटअप करके करेंगे, छोड़ दे। कैमरा हटा दे, बाद में सेटअप करके करेंगे। एक ही बार सेटअप करके करेंगे। वो नया एरिया देखो मेरा मैप में। ओके देख रहा हूँ। चुकंदर का नाहिदा रिव्यू। अच्छा चुकंदर का करना है, मेरा नाहिदा रिव्यू करो। शिट लेवल तो होगी। अच्छा सारा खोल दिया तो फ्लेक्स मारे हो मेरे पे। 18 22 30 देख रहे हो, चेस्ट भी उठाना शुरू। क्या लोग है रे, दुनिया बहुत पापी है रे। न्यू एल वो खाली कर रहा बंदा। わらわ लेक्सीन にとって普 लेक्सीन 遍も一種の美 बढ़िया नाम है। एक यहाँ पे मैंने गेस किया ठीक じゃ है, が यहाँ से 属 ये 性と पूरा はいつ पार्ट まで ऐसा も変わらぬまま続 सुमेरु く का もので होगा はない ठीक, और इसके बाद ये इधर का जो बचेगा वो पूरा कौन पानी सा side का? फाउंटेन का होगा। एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग आएगी और बिल्डिंग नहीं आएगी, ब्रिज बन सकता है। बिल्डिंग है, ब्रिज नहीं, मतलब एक टावर सा कुछ होगा। एंड देन इधर में तुम्हारा मॉन्स्टर्ड और ये पर पॉपर आएगा, और मॉन्स्टर्ड में एक अंडरग्राउंड तुम्हें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मेन सिटी के अंदर में देखिए जो ब्लैक ब्लैक से वाटर पे फील्ड है ना, वो पूरा एक अंडरग्राउंड होने वाला है। उसका रास्ता ऊपर से ऊपर के मैप से आएगा। 2 सेकंड दो। मेरे को एक रीजन दे। 大半のものの一生 शैन्यून は और नाहिदा के 紙に बैनर 書い पे ても नोएल 数 क्यों? 行にしかならずそのほとんどが退屈な物語なんじゃ Why the fuck is she there? क्या बंदा गाली खाने चला गया? चले गए आफ्ता। खुल गया अब नहीं खुला, देख 99% वेरीफाई वन। इसके नीचे भाई चलो योरसा, मेरे को भी एक योरसा ओए। दिला दो। हाँ तेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? क्या बोल अब। मैं पूछ रहा हूँ हम्म। शैन्यून और नाहिदा के बैनर पे हम्म, नोएल क्यों है? क्योंकि उसका रिटर्न आए हुए बहुत दिन हो गया ना बैनर पे, इसलिए। इसमें मेरा क्या? तेरा कुछ नहीं, गेम का तो है कि हर एक साल के अंदर में वो कितनी बार आएगा। अरे भाड़ में जाए। नहीं आएगा わら ही। わにとって नाइदा रिव्यू भाई देख 普 ले 遍 भाई। も一種の नाइदा 美 देखना ये नाहिदा है। दिख रहा है, じゃが सबको दिख रहा है। ये 属 नाहिदा 性 है। とはいつまでも変わらぬ 124 まま続 CM く है। ものではない बस निकाल के लगा रखा है, ठीक है, निकाल के लगा रखा है। 5 एवरीथिंग crit इज, damage, कोई 550 आर्टिफैक्ट भी नहीं लगाया इसने अभी। वो 5 550 डिफॉल्ट रहता है, हाँ, 550 डिफॉल्ट है, इसने कुछ नहीं चिपकाया अभी। वेपन देख। तेरे पे 2 क्या सा? हाँ चुकंदर पे 2 कहाँ से आ गया? ओ समझ गया समझ गया। चुकंदर ने ये आईडी सही में इतनी लकी कैसे हो सकती है यार?
देख पहले ये तीनों जो लगे ना लाइन से, ये तीनों बैक टू बैक है, इसके बीच में कोई नहीं आता। लिमिटेड बैनर तीनों जीता है, और ये एक पुल पे आया था वेपन बैनर से, ये स्टैंडर्ड से शायद से एक पुल पे। यू आर टू मच लकी मैन, ये आईडी टू मच लकी है। अबे ये साइड क्वेस्ट खुलने योइमिया वाली आईडी भी इतनी लकी बन गई और ये वाली आईडी भी इतनी लकी बन गई, पता नहीं। बात मत कर, ठीक है? बात मत कर। जाते जाते रिटर्न निकाल के आधी की फट गई रिटर्न देखते देखते। आदि बस चिल्ला रहा 5 स्टार ओ सही में 5 स्टार। अबे देख मेरे को लगा ना वो मजाक था, जैसे लैग हुआ ना तो अपन मजाक उड़ाने लग गया कि अब लूज हो गया, चलो ठीक है एटलीस्ट कितना जीतेगा। हाँ लेकिन वो जीतना भाई सच में जीत गया तो और ज्यादा आवाज निकल गई। उसकी फट गई तो कहता हूँ क्यों दुख दे रहा है? तू भी 3 जीत गया, ये भी 3 जीत गया। मैं 4 जीता हूँ, नहीं लेकिन 5 जीता हूँ लगातार। लेकिन एक और बात है, जो आईडी शुरू में हकती है वो बाद में अच्छी होती है, जो बाद में अच्छी है वो पहले हगेगी। शोंगली इसको बैन मारो कोई, फुलिना आयाका इसको बैन मारो कोई, 5 जीता हूँ लगातार। इसको बैन मारो कोई। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उस आईडी पे भी सेम था ऐसा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लक हो गया, बाद में आप पीटी रीसेट कब होती है? पीसी रीसेट ही नहीं होती है, 5 स्टार आने पे काउंटिंग होती है नंबर्स। अबे कैरेक्टर बैनर रीसेट हो जाती है पीटी, और क्या वही तो पूछ रहा वो। एक 5 स्टार आने पे पीटी रीसेट फुल होती है, उसके बाद लक है। फुल रीसेट होता है पीटी रीसेट। हाँ पीटी पुल पीटी हाँ वही जरा देख, मैक्स टू मैक्स तुम्हें 90 पुल्स तक जा सकते हो एक कैरेक्टर के लिए। करना क्या इसमें उतनी किस्मत अच्छी है 10 पे निकल जाएगा, किस्मत अच्छी है 20 पे निकल जाएगा, वरना सीधा जाएगा 60 50 70। किस्मत अच्छी है तो 65 से पहले का एक्सपेक्टेशन रहेगा। सेंपाई का 20 पे आ गया था, ठीक है। सॉफ्ट पीटी 68 से 78 सॉफ्ट पीटी होती है, और 78 से 90 हार्ड पीटी होती है, और 68 से पहले अर्ली पीटी होती है। हाँ सेंपाई का 16 पुल पे C1 ज़ियान्युन आ गया। अभी जो एक 10 पुल पे ज़ियान्युन जो आई है 16 वाले पे, ये पूरा अर्ली था एंड 50-50 भी था भाई, ये बहुत अर्ली था, ठीक है। मेरे साथ भी एग्जैक्ट सेम पुल हुआ था जब मैं ऑटो निकाला था। 10 पुल मार के बैठा था उस दिन, गलती से स्ट्रीम पे ही था, बहुत पहले की बात है। ऐसे 10 पुल मारा रैंडम, 18 पीटी पे या 16 पीटी पे, ऐसा ही था मेरा भी सेम नंबर। बट हाँ 10 पुल और दिया और मिल गया हमारा। ओह Xianyun मटेरियल मेरा तो 30 पीटी पे नहीं, हाँ पहले से रैंडम मैंने 1-2 बेसिस पे पुल करा था। अरे हर्षु करना क्या है? ओ रेपुटेशन कर रहे हो, आई सी। मैंने आधे के लिए पुल खोड़ने गारंटी हेल्प करने का मेरी गारंटी नहीं, मेरी 200% की गारंटी के नायदा निकल जाएगी। बट एक चीज, हेल्प करने का टाइम जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ वैसा करना तैयार हो तो बोलो, क्योंकि मैंने 5 दिन में करा है, तुम लोग के पास 20 दिन है यार। हाँ हेल्प करने का टाइम आ गया ना, इधर लेके घुस जा किसी के वर्ल्ड में। बिल्ड कहाँ उस वाले आईडी से आना होगा। ओ कल भी मैं जिसके वर्ल्ड में गया था ना, उसने अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला है, वो वाली लेके एक बार इधर से जा कोई। अच्छा हाँ वो 16,000 की 17,000 की आईडी है, फूक मारेगा उड़ जाएगी पूरी। 17,000 भाई, तेरा नॉर्मल अटैक मार देगा उसको। एलिमेंटल स्किल तो बाद में आता है। स्ट्रीम पे चुपके से गाइड है, ठीक है। इन बातों को शेयर मत करना प्लीज यार, बहुत राज की बात होती है। प्रीमोस फार्म करना मतलब LO करना। अच्छा अगर अभी क्या नाइदा है ना, सुमेरु, हम तो जानते ही नहीं थे नाइदा। सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे 2 चीजें, सुमेरु सिर्फ करो ठीक है, बाकी सारे रिलेटेड छोड़ दो। लेकिन हर्षु का तो ये दोनों हो रखा है ना। गोल्डन सलम्बर के 7 क्वेस्ट है, वर्ल्ड क्वेस्ट फाइनल चल रहा है टाइम। देखो बता रहा हूँ, ये 7 क्वेस्ट यहाँ से तुम्हें मिलेगा, अच्छा खासा पुल्स देता है, ठीक है। आर नारा का जनरल है, इसके अंदर 7 क्वेस्ट होते हैं।
4 इजीली हो जाते हैं, बाकी के 1 और 3 और 4 थोड़ा लेट से होता है, बट करना पड़ेगा। ये तुम्हें बहुत प्रीमोस दे देगा। यहाँ के देख रहे बदतमीज ये लो। डेंड्रोकुलस यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आता है डेंड्रोकुलस पूरा। उसके बाद फार्म कर लो, डेंड्रोकुलस फिल करके स्टैचू से बहुत तुम्हें मिल जाएगी। फिर वहाँ से सराइन की लाइक चेस्ट में फार्म करना ही है। अरे क्या है हर्षु, अब भी रोने लग गया है। ये डोमेन है 40 पुल और 20 पुल इसके अंदर चेस्ट से मिलेगा 10 प्रीमोजेम। 50 एक से आता है, 50 100 ये तो सॉरी हाँ वो लोग बोल रहे तेरे को खेलने 150 खेलने 200 250 स्वर 300 देख रहा हूँ। स्वर एक सेकंड, इसका शैन्योन निकल गया। मजाक नहीं फोड़ दूंगा। फोड़ दे, देख ले तू। कहाँ निकल गया? 20 जीबी 30 जीबी भाई, 30 जीबी डाउन। एक काम कर, पीसी सुन, 30 के बाद सीधा 70 पीसी तक रिस्टार्ट करने कर, बोलेगा। पीसी रिस्टार्ट कर और इसका फाइल लोकेशन जो है ना कॉपी करके कहीं और डाल, और फिर वापस से उनको उसको फोल्डर पे लाइक उसको पैच करवा दे। फिर बोला कब होगा? ये कर लोगे? इसने ये कर दिया है पूरा। अमृता पुल मैक्स है? नहीं होगा। अमृता पुल तुम्हें बहुत प्रीमोजम देगा। ट्री ऑफ ड्रीम्स तुम्हें प्रीमोजम देगा खाली सुमेरु करने से। और इसके नीचे तुम्हें जाना है, यहाँ पे वर्ल्ड क्वेस्ट तुम्हें सारा यहाँ पे मिलेगा। कैंप जो है ना यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। गोल्डन स्लम्बर के अंदर तो एक पीटी होता है, ये एक एरिया ही तुम्हें एक पीटी देता है। ये डिजर्ट सिर्फ इधर का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, वो गोल्डन स्लम्बर में नहीं आता है। ये सारे गोल्डन स्लम्बर से लिंक्ड है, इससे सब लिंक्ड है। ये पूरा तुम्हें एक देगा। अभी रुक जाओ, अभी भागने का भी टाइम नहीं है। इसके अंदर भी तुम्हें बहुत सारी हिडन चेस्ट होती हैं। यहाँ पे जो एक केज आता है, इसके अंदर जब जाओगे तो इसके अंदर भी तुम्हें पूरा एकदम, यहाँ पे भी तो अंडरग्राउंड है ना, तो इधर पूरा ये भरा हुआ है। और इतना सब करोगे तो तुम्हारा अचीवमेंट भी होगा, तो उधर से भी प्रीमोजम निकल जाएगा। अरे तुम करो तो, एक बार आईडी लॉगिन करके थोड़ा सा बता दूंगा, चाहे वर्ल्ड में आके देख लूंगा क्या कम है, फिर से बताऊंगा। करो तो भाई, करो तो, ना निकले तो बताना। इवन तुम्हारा ये पूरा, ठीक है, मॉन्स्टेड टू सुमेरु अगर 50-50% भी ये पूरा अगर कर रखा नहीं है पूरा, फिर भी निकलेगा। मैंने जगह चेंज कर दी। ये भी तो है, जगह चेंज कर दी पूरी। जगह फाइल की ना, हाँ। अब उसकी फाइल लोकेशन वापस से चूज कर दे उसके क्या बोलते हैं लॉन्चर पे जाके। लोकेट गेम। इनकोनोमिया भी तो है। अरे काहे थक रहे हो बे? जब मेरा कितना था ये वाला, इधर से 2 50-50 था कोई एक, ये वाला 30 कुछ था। देखो ये वाला मेरा 30 था, ये वाला 30 था, ये 50 था, इधर से 50-50 था, और ये 30 या 35 कुछ था, और इतने में ही मैंने रेड निकाल दी है। अकेले हो के हैं? वो कोई स्वाइप ही नहीं था, वो तो पड़ा हुआ था। फिर भी तो मेरे जितना अनलकी कोई थोड़ी हो सकता है कि 83 जाएगा बंदा। भाई वो तेरा स्किल इशू है, मेरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो गेम का है। ये इधर से ये क्वेस्ट तुम्हारे को नहीं दिख रहा, हाँ, इधर से तुम्हारे को ये हैंगआउट्स नहीं दिख रहे हैं। हर एक हैंगआउट तुम्हें 100 प्रीमोस देता है, 20 अचीवमेंट से और 60 यहाँ से 80 देता है। मतलब दो हैंगआउट से तुम्हें एक पुल मिल रहा है। तो ये सब करना नहीं होता है नहीं भाई, हैंगआउट है वो, कितने प्यार से होता है ना। रीडन के साथ हैंगआउट करने मिलेगा, फिर चलेगी। बाबू प्रीमोज बचाने का ना बहुत तरीका है। सिंचन आई एम 10 मैं लगा 30 मिनट में आंखों के सामने तुम देख लो। मैं बोलता हूँ क्या क्या करना है। ओके आ जाओ, ठीक है, बाजार से होके जहाँ से भी जो होके आना है, लॉगिन करके बताता हूँ।
पहले घूम के आ जाओ तुम, ठीक है? consolidating, मैं unzipping निकलवाने game का गारंटी लेता हूँ, resources, चलो। unzipping अगर game मैं गारंटी लूंगा तो resources, सब अपना अपना 100 करोगे। GBs। तुम्हें सिर्फ खेलने को है, ठीक हो है? गया कर गाइड मैं कर लोगे। रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ खेलना है, कर लोगे तो नाइदा निकल जाएगी। हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अगर उतना कर लेंगे तो आपकी नाइदा आपके हाथों में है। नाइदा और रेडन को नहीं छोड़ते हैं, दोनों पेयर इज द बेस्ट पेयर। देख तू अभी गेम पैच कर रहा है, तू अभी गेम खोल रहा है, सोच मैं सुबह में नहीं खोलता तो अभी तक रेजिन कैप्ड रहता, इवन सुबह में कैप्ड था, 155 था। कैप्ड नहीं होता भाई, 155 था भाई क्लोज तो कैप्ड। कैप है वो। हाँ तो मैंने सब उड़ा दिया ना बॉस पे, जो करना था मैंने कर दिया। हाइपो पायरो हाइपो, जियो हाइपो एंड मैनफिस्ट। एंड अभी ये 2 और मैनफिस्ट मारेगा तो रेडन हो जाएगी 80। हाँ मैनिफेस्ट है ना। जो इसकी रेडन 80 हो जाएगी, फिर आराम से चिल बेबी, फिर 90 के लिए आराम से सबका फार्म करेगा और टैलेंट करेगा, क्योंकि इस नायाका का ऑलरेडी 80 फार्म कर रखा है, इसको बस साकुरा बुलूम कलेक्ट करना है। एक बार घूम के रीचेक करूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये चेस्ट पे ना भरोसा नहीं होता है। हाँ टाइम इतना नहीं मिलता है दिन में की वजह से। ओके अगर दिन के 5 पुल तो जमा कर लोगे, 4 पुल ही तो कर लोगे, 20 दिन है, 20 चौका 80, इतना भी नहीं हो पाएगा। नाइस थंबनेल। हाँ मिस्टर एडिटर को बोल दो, मिस्टर एडिटर को शाबाशी दो। मिस्टर एडिटर इधर गेंशिन को गाली दे रहा है। नाइस थंबनेल। जबरदस्ती लगाया है वो। जबरदस्ती। नहीं मेरे को पैसा नहीं दिया अभी तक। पैसा तो कभी नहीं दूंगा। अब बोलो अब बोलो, जब कमाएंगे तो बांटेंगे। इसको बैन मारो कोई, YouTube पे बैन मारो। देखो दिन का तुम 4 घंटा भी गेम नहीं खेलते हो क्या? बस 4 घंटा नहीं खेलते? नहीं 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 आर्कन क्वेस्ट करो ना, एक एक्ट से एक और 1.5 पुल मिलेगा, एक्ट से एक पुल और तुम्हें 90 प्रीमोज ऐसे मिल जाएंगे क्वेस्ट से, क्योंकि क्वेस्ट तुम्हें डोमेन में ले जाता है, इधर उधर रहता है, बहुत मिलता है, और 60 तो वो खुद दे देता है। ये क्या 2 घंटे सिर्फ, 2 घंटे टाइम दो, डेली के 4 पुल फार्म कर लो, कभी किसी दिन ज़्यादा मिल जाए तो 5-6 पुल कर लो, कवर अप हो जाएगा। डेली का 4 पुल का रेशियो रखो ना, 80 पुल पे तो इजी पीजी आ जाएगी भाई। अबे ओए मैं भूल गया, बट जब बॉस मारते हैं हम लोग तो बॉस का जो क्लेम ड्रॉप्स है वो क्या ओरिजिनल रेजिन, ओरिजिनल रेजिन ओनली और कंडेंसर नहीं होगा, ठीक है? तबीयत इसकी खराब हो गई, ठीक है मान गया। कंडेंसिव डोमेन पे होगा। अरे मान गया कि ये नशे में चलना, मान के ये तो तू जाके उधर वो जो मंगाया ना वो पढ़, इधर अब गेम छोड़ दे। ना भाई वो तो होता रहेगा। शैन्यून 1 साल बाद आएगी। शानियन जा रही है अब। चल 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 बैठ। नहीं शानियन रीरन जल्दी आएगा, फर्स्ट रीरन जल्दी आता है, उसके बाद 1 साल। डेली का बस 4 प्रीमोस फार्म करो। रीरन आए ना है, मेरी गेम पहले चल जाए। चल जाएगा चल जाएगा, जुगाड़ लगा लेंगे। अरे नाइदा से बातें शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पे वो फंगुई वाला हो जाएगा, इसके लिए मेरे को डिफेंस जाना पड़ेगा। 80 GB डाउनलोड करेगा, 20 GB करेगा तो रो देगा गेम। भाई उसका इंटरनेट अच्छा देसी नशे हैं, अच्छा नहीं होगा। कल होगा ना वेडनेसडे थर्सडे, कल इसका एक काम हो जाएगा। प्ले सेंटर तो अब आएगा ही, ज़्यादा दिन भी नहीं है। अच्छा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पर मेरा गेम नहीं आएगा।
एक काम कर दे, तो अभी से स्विगी पे कुछ ऑर्डर लगा दे। या तो गेम पहला खुल जाए या तो स्विगी पहला पहुंच जाए। मैंने मंगवा भी लिया, तू क्या बात कर रहा देख गेम ही स्लो है अभी। है? तू कुछ मंगवा भी लिया। अगर आ रहा कोई हूँ मैं नीचे। आसपास एक्सीडेंट होगा तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो, सेम टाइम पे किसी जोमेटो पे फ़ोन कर या स्विगी पे, देख पहले कौन पहुंचता है। पहले एम्बुलेंस पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। पहले एम्बुलेंस पहुंचेगी। क्योंकि जोमेटो वाले ट्रैफिक में फंस जाएगा। दिमाग देख रहे हो, ज़्यादा नहीं लगा रहा है। चल मान ले कि हाईवे दिया, एम्बुलेंस just पीप पीप हाईवे पीप दिया पीप मैंने। करेगा। हाईवे दिया। हाईवे है ही नहीं इधर। अरे तो मैं लगवा दिया ना, चल मान लेते हैं कि सारे ट्रैफिक खुल हो गया, ठीक है, कोई जैम नहीं, फिर भी कौन पहला पहुंचेगा? एम्बुलेंस ही पहुंचेगी, तू रहने उसको दे, रास्ता देंगे सारे। तू बस रहने दे, ठीक है। मैं रास्ते पे कोई आदमी नहीं रहने दूंगा, ठीक है, अच्छा अच्छा, सबको बाजू किनारे करवा दूंगा। तो फिर तो जोमेटो वाला पहुंचेगा। तो हाँ, तो बस ऑब्वियस। समझा, लेकिन लेट से। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, तू लॉजिक नहीं लगा रहा। मैं लॉजिक नहीं, बात मैं ये मैजिक लगा रहा हूँ। मैजिक, what the fuck is that? हाँ, दैट इज यू। ये देखो एक जादू दिखाते हैं, जादू तो मेरे साथ हो रहा है अभी। ये देखो। चलो स्ट्रीम देखो, जादू दिखाता हूँ। ये देखो जादू देखो। भाई साहब क्या जादू है। बाय द वे सब खुल गया, देखना सब क्या टेलीपोर्ट वे जादू पॉइंट है। खुल गए। जीन का यही वाला अच्छा लगता है, इसमें कुछ दिखता भी है बहुत। क्या पहले वाला ही कपड़ा जीन का अच्छा है, अब सब दिख। सच पता चलेगा क्या ये गेम काम करेगा कि नहीं। ये गेम बोल रहा है, तू कौन है? हाँ भाई, जीन का पहले वाला कपड़ा ज़्यादा बेटर था। ये पैक करके कुछ ज़्यादा इन्होंने बड़ा काम नहीं करवा दिया। अच्छा, जीन का अपडेट क्या हुआ है? थोड़ा सा आगे से थीम और थोड़ा दिखना बंद हो गया बस, और कुछ नहीं। 騎士団の बट みんな दिखने は वाला ज़्यादा बेटर है। 真面目にやっ वाह, ているのだろ ये うか。 कमाल लगता है कि इतना हिलता है ना। 勝負 What the fuck? तू स्ट्रीम देख ना, कितना कुछ दिखा दिया जीन का मैंने। उसने भाई तेरे को साहब, डीएम में बहुत उससे ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। डीएम सेलेस्टिया है भाई, सेलेस्टिया में भेजा है डायरेक्ट। ओहो, सब देखेंगे, सब मजे लो। भाई साहब, जीन किसी से कम नहीं है। चल क्वेस्ट शुरू। おあれってナヒーダじゃないか。ナヒーダー、まさかここでお前に会えるなんて思わなかったぞ。 Precious chest. ええ、私もよ。 क्या लगता है स्वर? 久しぶりね。最近調子はどうかしら。 खुलेगा ही नहीं। 楽しんでいるみたいで何よりだわ。お前はどこに行ってたんだ？手がかりを探しながらついでに気分転換でもしようと思ってね。実は世界樹を救った後から私の記憶に一部曖昧な断片が存在するの。まだ一つ何かすごく大事なことが残っている。それをうっすらと覚えているのに、それが何なのかどうしても思い出せなくて。え？なんでそんなことが？心配すんな。思い出せるよ。オイラたちが一緒に手伝ってやるぞ。ええ、ありがとう。それなら一つ見せたいものがあるわ。おお、すごく綺麗だな。しかもなんか力に満ち溢れてる感じがするぞ。これは私がスラサタンな聖書で見つけたものよ。でも私はこれについて全く見覚えがないの。中には純粋な元素力が詰まっていて、私の力にかなり似ているけど少し違うみたい。
曖昧になっている記憶と何か関係があると思って調べてもみたわ。でも収穫は何もなかった。verified 55 56 旅人、お前は何か思い当たることないか？じゃあこうしようぜ。ナヒーダ、オイラたちこれからちょうど冒険に出ようとしてたところなんだ。もし何か手がかりを見つけたらすぐお前に教えてやるぜ。ありがとう。まさかまたあなたたちに面倒をかけることになるなんてね。そう遠慮すんなって。お前こそまだ心配事がたくさんあるんだろ。मेरा गेंशिन खुल जाए वो सबसे बड़ा मीम हो जाएगा। Meme of the year, Genshin. ほら、どっか行け。ここはキノコンが来ていい場所じゃない。I need a way to the boss. 申し訳ありません、送信様。キノコンは普段ここに近寄らないのですが、まだどっか行かないのなら力ずくで追っ払うぞ。ちょっと待って。 I こ guess の子何か言おうとしているみたい。送信様、 क्या हुआ? こいつは魔物ですよ。 大丈夫。 Hey. सुअर そう。いいわ。だいたいわかった。 थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं. Let's see. どうやらこの子、私たちをどこかに連れて行きたいようね。今のでわかったのかよ。ええ。 मत बोलना इसके 生き物によって生活習慣やコミュニケーションの取り方に違いはあれど、その感情は共通しているわ。この子からは焦りと恐怖を読み取れた。私たちの助けを必要としているみたい。まあ、確かにキノコンは可愛いやつだけど。 क्या बेटर रहेगा 80 GB डाउनलोड कर लूं चुपचाप. कर ले そうだな。 कर ले इजी じゃあ行ってみるか。え、 इजी ने बहुत この better 子が रहेगा. 道案内をしてくれるはずよ。 पॉइंट है 見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には穏やかなやつもいれば凶暴。 अरे इजी है भाई बॉस इजी है भाई लिटरली इजी है 20 GB दे दो, 20 MBPS दे दो जल्दी से. 20 GB डाउनलोड It करके देख can't be लेते हैं अगर helped. होगा तो. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. चलो आधा घंटा वेट करते हैं. After आधा all, घंटा बोल रहे हैं they fix हो can't जाएगा. distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. एक सेकंड. That's not too different from how BGMI humans की think sometimes. अगर अच्छी That's what खासी I meant by मोमेंट्स वाली shared वीडियो निकालो तो. emotions. सुन, हम्म. ये बोल ही रहा है 20 GB लगेगा तो कर दो 20 GB फिर. अपडेट देना उसको, क्या करवा रहा है, कुछ तो क्रैश हुआ है. फिक्स बोल रहा है, फिक्स कर रहा है. रिसोर्सेज वो तेरा क्रैश हुआ है, रिसोर्स क्रैश क्रैश. कैसे होगा? कुछ तो फाइल के साथ वेटी हुआ है. फाइल करप्ट हुआ है चल भाई मैं प्री अपडेट मार रहा हूँ, ठीक है. तू ऑलरेडी जब 8 GB डाउनलोड कर लिया तो काय का अपडेट. 400 MB सिर्फ पैच आता था आज का. मेंटेनेंस का जो पैच होता है ना, वो सिर्फ 400 MB का आता है. पैच भी डाउनलोड. It's time to move on. We shouldn't stay सुबह किया here. था. पता नहीं. हाँ, हाँ तो कुछ कॉलेज में और start बेटी किया है था. बस. कॉलेज में शुरू करने वाला था फिर मैंने बंद कर दिया. तब तो कुछ और लोचा है भाव. उससे हो गया तूने मैं पीसी गेम सडनली खुली बंद भी. किया है क्या? नहीं ये सब हो गया था. लॉन्च का ऑप्शन दे रहा था मेरे को, मैंने बंद कर दिया उस टाइम कि जब हो गया तो मैं बाद में खेल लूंगा. तभी कुछ इधर आया कुछ तो ये शुरू कर दिया, फिक्स करना शुरू कर दिया. ये नहीं रे, वो बोला? फाइल ही तेरे साथ उड़ा हुआ है इसलिए फिक्स कर रहा. शांगलिन में जेंशिन आज तक ऐसा किया ही नहीं है कभी. हाँ फाइल करप्ट ही होने से होगा शांग, क्योंकि गोबा. अबे जेंशिन आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं. गोबा मार रहा है. गोबा का तूने फूक नहीं देखा क्या 30,000 का? मेरा 100 के दे रहा है फूक. भाई देता है, मैं सोलो की बात कर रहा हूँ. बफ लगा देना, गोबा ही अकेला स्कारा मार देगा.
70 एमबीपीएस दे रहा है। क्या कहते हो? HP अटैक क्रिट रेट 23 मिनट बता रहा है। 1 महीने शॉट बनाना चाहेगा बीजीएमआई की? 1 महीना बीजीएमआई शॉट बना मतलब सकते हैं, कोई ब्रेक मार मार के एक बार ट्राई करते उसके भी वापस से रीट्राई, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था। बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम ढंग का चीज़ लो बना लो। बस क्योंकि जैसे मान लें कि जेंशिन तो अपन खेलेंगे, बस स्ट्रीम का लोचा रहेगा तो स्ट्रीम रात को करा करेंगे, बाकी उधर फोकस। हाँ न्यू बॉस क्योंकि सबके सब बिजी हो जाओगे ना अपने अपने जॉब टाइम पे, मैं अकेला इधर वेला रहूँगा फिर। वेला आदमी वेला नहीं रहेगा तो क्या हाँ तो रहेगा? ये तू जाएगा उधर पढ़ने, तेरा ख़त्म, रुक मैं नहीं स्ट्रीम बंद मैं आएगा। उसके बाद तो जॉब वॉब It करने लग appears it जाओगे was in ना a सब। hurry because of this unconscious fungus. सर मैं आएगा। Seems like they might be family. जेंशिन So कितना maybe भी this होना तो इंडिया fungus में wanted किसी to एक bring Nahida यूट्यूबर here का to 100 help के its होना family बहुत रेयर member. होगा। Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. मेरा सब I'll take a हो look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? एवरीथिंग डन। Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. मेरी फुल टीम डन। Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. अबे वीपी रीसेट हुआ है, what the fuck? Bullshit. Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. आर्क कैटलिस्ट कैटेगरी में ना आर्कोन सी सिर्फ होते तो बढ़िया होता। Looks like everything is fine now. क्योंकि लाइक आर्कोन के अंदर कुछ स्पेशल पावर होता है इसलिए। लेकिन कैटलिस्ट लगता है कि ये जादूगर है, क्यों मतलब वो एलिमेंट यूज कर सकता है ना अपने हाथों से, तो वो ज्यादा कूल लगेगा एज कंपेयर नॉर्मल कोई कैरेक्टर कैटलिस्ट है। नहीं 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 तू सोच। हाँ रेडन का बुबा शॉट नहीं होता सोच रहा हूँ तो वो मतलब सीधे पे हाथ रख के ऐसा करती कुछ ऐसा, मतलब क्या बोलते रैप करती हाथों पे और फिर कुछ करती। जोंगली क्या जोंगली का जो शिल्ड का बनाने का तरीका वही रहता, और जो मारने का तरीका वो डॉक्टर बैजू बैजू वाला कुछ और होता। अब नहीं पत्थर नहीं फेंकता, लड्डू फेंकता है वो। नहीं कश्मीरी है, निगवांग फेंकती है। हाँ निगवांग वाला पत्थर अगर जोंगली पे होता तो ज्यादा बेटर लगता। चल छी भाई नहीं भेज, आर्कोन्स को कैटलिस्ट बनाना चाहिए था गेम को स्टार्टिंग से ही। ना भाई तो बुलशिट है। ये सोचने वाली थॉट नाइदा कितनी बेटर लगती है आर्कोन पे। व्हाट द फक कूल। खुद अभी लड्डू फेंक रहा है। रिमेंबर मी या ब्रो व्हाई नॉट, सब याद रहते यार। भाई नाहिदा से हाँ रेडन की बुबा शॉट नहीं होता तो क्या होता, क्या होता बुबा शॉट हाई पे हाथ रैप करके गरम करके कुछ जादू करती या तो चेस्ट पे या कहीं दोनों हाथों से, और क्या होता। कहीं वो दोनों मोना मिला हाथों से। फर्स्ट 5 स्टार उसका मोना निकला। किसका? मुझे हेलो आई गॉट मोना द फर्स्ट 5 स्टार। ओहो कोई नहीं, मोना इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप रो रहे हो। मोना नाइस है, मोना नाइस। मोना डैमेज भी देती है और डैमेज बफर भी है, तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है। चाहो तो आप पुल करके निकाल सकते हो नाहिदा।
पहला लूज तो बहुत बन, बट एक चीज़ मैं बैन मारो बोलूँगा, आपकी आईडी पे ज़्यादा कुछ था नहीं और फर्स्ट 5 स्टार है, तो आप इस आईडी को डिलीट कर दो और कोई नई आईडी बना के देख लो कि उस पर जल्दी आ जाए। आईडी को डिलीट कर रहे हो। क्योंकि तुम पहला ही हार गए यार, पहला अगर जीतने का चांस बनता ना तो कह सकता था कि हाँ थोड़े लकी हो, लकी है, लकी है। क्योंकि पहला ही हार गए भाई, पहला 50-50 होता है और तुम पहले ही हार गए। 35 लेवल है, 2 दिन में पहुंचता है ब्रो 35। 2 दिन में, चल 2 दिन में 35 एक दिन में तो मैं यार 20 जाता हूँ। वो तुम्हारा स्किल इशू है, मेरा नहीं है। जेंशिन का धोखा देने का तरीका थोड़ा बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बस चिपका देता है। देखो धोखा वो होता कि तुमको ना देहा मिल जाता अभी के टाइम पे, थोड़ा दर्द होता क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि वो देहा बिना टीम की नहीं दिया तो चलती है। अच्छा है। और मोना किधर भी घुस जाती है तो मोना अच्छी है, लेकिन तुम्हें लक चाहते हो कि और अच्छा हो जाए। हेलो, कहना क्या चाहते हो? मुझे कहीं खुद भी 9 घुस दिन जाती से है। लगे हैं ब्रो, वापिस से घिस सकते हो यार, ज़्यादा टफ नहीं है। इस आईडी पे ग्राइंड करके तुम एक पिटी जाके नाइदा निकालोगे या फिर किसी और आईडी में थोड़ा सा घिस के नाइदा निकालोगे, सोचना आपके ऊपर है, क्योंकि 35 यार कुछ ज़्यादा नहीं होता है ब्रो, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बस जहाँ तक कर रखा है फटाफट से स्किप कर करके जल्दी जल्दी पहुँच जाओगे, कौन सी बड़ी बात है। न्यू आईडी बनाऊंगा 30 लेवल तक, आपके ऊपर है। नाइदा का अभी 20 दिन है, तब तक आप सेव करो, एक ही दिन में एक ही बार जमा कर लो 60-70 पुल्स और एक ही बार मार देना, या तो 10-10 पुल करके मारो ब्रो। आई सजेस्ट यू कि आप 10-10 पुल मारो, करके मारना, मतलब इंतजार मत करना कि हाँ यार कितना यार भूल जाओ, 10 पुल जमा हो मार देना, 10 पुल जमा हो मार देना, जल्दी आ जाए 5 दिन के अंदर में तो ठीक है, 5-6 दिन में अगर 10-50-60 पुल करके आ गई तो बहुत अच्छा हो गया लग। मेरी नेटवर्क स्टेबिलिटी की लगी हुई है। कब लगी नहीं वही बेटी है, भाई अदरवाइज 5 एक MB बार का और पैक ग्राइंड कर चाहिए, सकते हो, उस क्योंकि पे प्लीज हम जल्दी लोग उस ऐसे ही पे करते हैं। डिवाइड कर दो। हमें अगर 10-20 पुल पे कोई कैरेक्टर नहीं निकलता है स्टार्टिंग की अपनी नई आईडी पे, तो हम आईडी फेंक देते हैं, फिर डिलीट करेंगे, फिर नया आईडी बनाते हैं। हमें 10 से 20 पुल में कोई एक 5 स्टार चाहिए होता है बस। एंड आई नो ये थोड़ा रेयर है, लाइक नई नई आईडी बनाना बोरियत है, बट स्टिल अच्छा लगता है एज कम्पेयर आईडी घिसना। Oh, I didn't expect छोड़ such मेरा a स्क्रीन देख। strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. शेयर कर, शेयर तो करो। इसके लिए अरे सो है रहने दे क्या? फिर, फिर रहने मेरे दे, को ठीक लगता है है फिर। शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पीड आ रहा था वो ड्रॉप हो रहा है। हम 2-2 आ रहा दिन है, में ड्रॉप यार हो कर रहा है, आ देते रहा है, हैं। ड्रॉप हो रहा है। मैं जितने आईडी बनाता हूँ ना 10 पुल में नहीं आता तो मैं आईडी फेंक देता हूँ, पता नहीं वो मेरा है, थैंक यू सर। फेंक देता हूँ। 10 पुल में मेरे को चाहिए 5 स्टार, 10 पुल में। देख लो भाई, 3 आईडी बनाई, तीनों इसको पे बैन 10 पुल मारो पे कोई। आया, इसलिए खेलता हूँ। इसको बैन मारो कोई। 5 स्टार आईडी फेंक दिया, ये ला निकाल के बैन मारो। 3 पुल पे रेडर निकाल के मैं सॉरी ये ला निकाल के और आईडी मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि उस समय सोच रहा था कि वो आईडी में करूँगा क्या, ऑन स्ट्रीम निकाला था मैंने वो। क्यों फेंका? 12,000 की आईडी फेंका थी। क्यों? फेंका क्यों? जीमेल चेंज कर दिया, पता नहीं अब वो जीमेल किधर है। देख रहा। जीमेल चेंज करते करते टेममेल के हवाले करना पड़ गया, क्योंकि जीमेल ही खाली नहीं रहता था अकाउंट रिरोल करने के लिए। एक और आईडी फेंकी हुई है, एक येलन वाली और एक और किसी और 5 स्टार के साथ फेंकी है, तो क्या करूँ, मेरे साथ वैसे ही होता है तो मैं कर देता हूँ। आफ्ता बोर हो गया था कि दिन में तू कितनी आईडी बना रहा है, बस ये समझ जा। उसकी खुद की आईडी देखी थी। Paimon can talk. हाँ तो 6 महीने में बीच में नहीं खेला और वो कंटिन्यूस था, इसलिए थोड़ा सा आगे हैं, बट स्टिल उससे पहले मैं सब कुछ रीच करके बैठा हूँ। हम दोनों की आईडी सेम है, आफ्ता की आईडी और मेरी आईडी सेम है, फिर भी इतना डिफरेंस। 6 महीने का डिफरेंस है। सेम सेम 3 बट महीने डिफरेंट। कुछ नहीं है इतना। Hello, Paimon. I am not yet able to अब वो evaluate कैरेक्टर्स को an 70 कर रहा organism's हूँ, मैं ऑलरेडी करके intelligence बैठ from गया its हूँ, अब मेरा appearance. आर्टिफैक्ट है तो हम I दोनों का will सेम ही only है। know you were able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal.
But does Paimon really look so dumb 10 that मिनट people बता might रहा है think Paimon doesn't but know how to लगेगा talk? अभी 15-20 You misunderstand, Paimon. A mouth क्या is गिनेगी used for ओए eating, 100% breathing, हो गया. and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. 100% done. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do पाइमन एक possess a क्रिएचर number है of human traits, एज अ it is फंगस के still हिसाब very से. common for creatures to have similar external अरे forms but बेइज्जती कर दिया ना completely फंगुई different ने interiors, just like fungi and कि slimes. मुंह तो सबके पास होता है लेकिन सब बोल नहीं सकते. फिर तुम कैसे बोल सकती हो? पाइमन को बोला. हाय हाय. तुम क्रिएचर हो. पाइमन भी लाइक व्हाट. पाइमोन This fungus study at the academia? एक रियल गॉड Seems है even ना, more talkative than नाहिदा Paimon. उसमें बहुत अच्छी रोल फुलफिलर है. अबे इधर वीड उसको इमोशन से मतलब नहीं है, कैटलिस्ट है और वो रियली मैजिक भी करती है. कैमरा हाँ उसके मतलब हाथों पे एलिमेंट है ना, इसलिए. सारे आर्कोन का तो एलिमेंटल स्किल का ड्यूरेशन 25 सेकंड ही है. असली आर्कोन तो न्यू विलेट असली आर्कन तो न्यू विलेट है. मैं क्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ कौन आर्कोन. You're not a fungus, देख are कर you? बोल दिए तेरे को ना. समझ That's जाएगा, तेरे को correct. समझ जाएगा कौन This है might असली be आर्कोन. surprising कर to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. बिस्तर गरम It कर might दिया. startle my fellow family कोरिना के members साथ गरम if होगा. I speak too much using this strange voice. क्या न्यू विलेट का? Me, 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 me. ओ बोला. मेरे को लगता है तू एक बार ही It बस न्यू says that विलेट की it's very पावर्स देख thankful लेना, for your help. ताकि आर्कोन में अबे ड्रैगन है वो. तो तू ड्रैगन देख तो आर्कोन्स का पेट होता है ना. अरे I तू was देख confident that I knew of all the creatures into लिटरली that, भाई, even if there तू are देख ones बस I've never आर्कोन seen कर with my दे. own eyes. अच्छा I कितना thought I पावर है? possessed all the relevant न्यूलाइट पे knowledge कितना about पावर है? them. तू देख एक बार, देख एक बार, तू कार्कॉन कर. एक्ट 4 में और 5 में पता लगेगा. एक्ट 4-5 में तो 4 दिन मार रिक दिया 6 दिन में करता हूँ, ठीक है. 4 दिन. नाहिदा का आज खत्म कर लेते हैं अबे नहीं. और रात को एकदम शांति से ऑफ स्ट्रीम बैठ के सारा रिकॉर्ड करता हूँ. यार करते जाता हूँ. एक्ट 4 अच्छा मैं पूरा एक्ट अभी से रिकॉर्ड करूँ तो नुबलियाट का अच्छा खासा शॉट बना सकते हैं ना, हाई क्वालिटी वाली. डुप्लिकेट के एडिट्स बनाओ. मतलब अगर रिकॉर्ड करूँ अच्छे से तो. चलो मैं कर लेता हूँ एंड सबको गोल्ड ट्राई पे डालता हूँ. कमिंग एंटरप्राइज. However, What? even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. Coming enterprise. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse. Yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. आज नाहिदा का समय खत्म. आज ड्रैगन खोल ही दूंगा. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert?
It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. वो बा So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. follow बोला quest करने दो लिखो I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. पापा मेरे को तेरी आंख से देख रहे थे पापा मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में भाई वो हम लोग का ओजी मीम है मेरा तो मन नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में यू कैन डिफीट इट देख ये जो फोटो जो भेजा है ना मैंने वाइट वाले क्या बोलते हैं लाइंस वाले के अंदर में बैनर का व्हाइट लाइंस के अंदर में है देख रेडन जैसा दोनों साइड का लग रखी है ना हाँ सेम उसी जगह पे रहेगी लेकिन साइड पीछे का जो बैकग्राउंड है ना इनकोनोमिया वाला वो पूरा दोनों एज तक लाइक करना पड़ेगा तब जाके वो पीसी पे अच्छा लगेगा मेरा क्या अरे एक और कर सकते हैं ना कि पीछे कोई और एक पूरे पे थीम रख ले और फिर इसके ऊपर से ये तो जहाँ वाइट खत्म होगा वहाँ पे कुछ ब्लैक शैडो सा एक थीम आएगा मतलब जो भी बैकग्राउंड होगा एक Do you understand what I'm saying? I can't understand. My game is not Cooling, so दिमाग इसी घबराएंगे. Yes. एक काम कर दानिश अब अगर ये मेरे को बोला ना 80 GB डाउनलोड कर अभी सुन फाइल कॉपी कर अलग जगह चुप रहे अभी होने दे फिक्स गेम रिसोर्स इसका कॉपी करके तू सीट पे वापस डाल दे और गेम अनइंस्टॉल कर दे मैंने कर दिया है भाई वो ट्राई मत बोल मैंने कर लिया तू गेम फिर से इंस्टॉल कर और लोकेशन उसको दे वो मर्ज कर लेगा खुद दे दिया है वो मैंने ट्राई कर लिया तो पूरा इंस्टॉल कर दे छोड़ पहले होने तो दे 22-20 GB पहले ठीक है अंबानी का नेट है And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? Agreement? You might not remember,
but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. कैटास्ट्रॉफी। उतनी स्पीड आ रही है, कोई जरूरत नहीं है जाने हम कुछ भी करो, डिस्कॉर्ड कुछ नहीं खाता है। खाता है भाई, कभी कभी खा भी लेता होगा। खाने पे आते ना तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं स्ट्रीम टाइम पे। नहीं भाई, नॉर्मल भी बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ वो कभी कभी खाता है, क्योंकि जितने लोग हैं वो लोग इसलिए डिस्कॉर्ड नहीं चलाते हैं, उनका नेट ही खत्म हो जाता है। There is something that I'm very concerned about. इसलिए तो by the way 50 और 24% हो गया 2 एरियाज। आज 100 कर ही देगा मैं। Yes. So देख ले भाई। I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, but also different? चेक करता हूँ, रुक, रिक्वेस्ट पे हूँ, क्लिकिंग कर रहा हूँ भाई। क्वेस्ट के साथ साथ एक्सप्लोरेशन पीक। मैं ऐसे एक बुक्स अगर खरीदने लगा ना तो मेरे घर में बवाल हो जाएगा। क्या बुक्स? ये वाला। दिखाएंगे क्यों? तो कहाँ रखूंगा ये बताइए। रख देंगे कहीं। गलती से देख लिया तो भाई चैप्टर अलग चैप्टर है। चैप्टर अलग है, स्टार्टिंग में नहीं है, एंड में है। बट अगर तू नॉर्मली बुक खोलने जैसा खोलोगे फिर वो स्टार्टिंग में ही है। लास्ट ही पेज खुल गया तो जहाँ भी है वही पेज खुला बार बार तो, और बाजू में कोई खड़ेला है। चैप्टर 43 है, ठीक है वो 43 है तो 36 क्या हुआ? ये तो राइट हैंड साइड से खुलता है नॉर्मली। अभी देख सेनपाई फोर्स कर रहे हैं कि वीडियो बना दे, 4 मिनट की व्यू ड्यूरेशन अभी तक है। नहीं चलेगा ब्रो, मेहनत बस बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं होगा। गेम बदलते हैं, जिसका चलेगा वही गेम चलाते हैं। सबका शॉट बनाता हूँ एक महीने तक। The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. Domain expansion. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. No matter how the road here is a little rough, I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road! Ah! Enemies! You're up, traveler!
Everyone ये hold लोग hands. ये स्पेशली इस क्वेस्ट के लिए Strike a pose. Barbados. Guide us. कैटास्ट्रॉफी Boba, get them. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey, Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh, no! Paimon was just curious! Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Yes, Sare. Strange and Okay, let's cute head at the out. same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Floating hydro Yes, fungus. this way.
We're almost there. Floating nig. What's up, bro? What's up, bro? What's up, what's up? Hello, bro. Hello, bro. हरा मैं मुट्ठा लो सच्ची? पहले नहीं बताया? नहीं It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times already! चलो कर देते हैं. I see everything! Strike a pose! Let the world come alive! Oh, neither trial. My sword! Eat this! Nice and spicy! Grow! बट वो अच्छी नहीं है. अच्छा बस डैमेज करती है. बरो बात मानो, श्यान्युन अच्छी नहीं है. दिमाग से वहम निकालो. पिटी बर्बाद करना इज नॉट अ गुड थिंग. बीइंग अ गुड प्लेयर इज नॉट अ गुड. कर रहा है एडिट. ये देख, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा देखना पड़ेगा. हाँ आ रहा है. खुल गया. यस खुल रहा है. आ रहा है. खुल तो गया गेम. चलो अच्छा है तुम्हारा गेम खुल गया. कुछ तो अच्छा हुआ. जिंदगी भले ही अब अच्छी अच्छा ना हो. नहीं हुआ. कोऑप में 2-4 अच्छे मिल जाए बस. 3 अच्छा बन जाएगा. कोऑप अच्छा होना चाहिए ना.
begins! Let my name echo in song! Barbados, guide us! कुछ भी करो ना इधर डैमेज नहीं देने वाली। मतलब नायदा का खुद तो पर्सनल डैमेज थोड़ी ना है। पता है मुझे, का तो रिएक्शन डैमेज आता है। इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी करो नायदा डैमेज नहीं देती। लो एयर पे दे सकती। नहीं उधर भी उतना ही डैमेज होगा ना फिर उनके लिए। अपना डैमेज उधर पता चलेगा। So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. काम कर गेम छोड़ दे। बहनों ने का ही काम पड़ेगा। मन भर गया हुआ तो। Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Follow me. As a pool. ये भाई मैं बोल देता है ना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? भाई मेरे को जानविन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ओ यूज़ कर रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा वो एक्चुअल में तभी तो लगी है। भाई मेरे को गेम प्ले बहुत अच्छी लगी। All right, Just for looks ना। नहीं गेम प्ले। I tried the game play. I tried the game play. Okay. Looks good. Looks almost too good. हे भाई जानविन जा रहा हूँ। मैं क्यों जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बस मेरे को जा रहा
गेम प्ले भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, मेरे को उसके अंदर कुछ ख़राब नहीं लग रहा, ठीक है। बट अभी सच्ची बताऊँ ना तो काजुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वो चलेगा, मेरे को काजुआ भी निकालेगा, बट मेरे को xianyun अच्छा लगेगा। ओके यू गो। मुझे मजा आया। फनी गेम प्ले तो है, वो चीज़ तो देखा है। नहीं यूज़ करने में काफ़ी We're कूल है, close now. ऊपर से आना It's नीचे just a जाना। little further inside. किट बहुत सही लगा मेरे को उसका, But there are so many fungi here. बट वेपन Probably भी लाना all पड़ेगा। ordinary fungi, right? Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. Wait. They are very important to us. They can be reasonable as long as we try to communicate. What should we do? मेरा कांड You're हो the गया, only तेरे को one पता who है? can make it through, right? But you'll need Nahita's power if you want to save that fungus. मेरे को बोल रहा था, I've got an Genshin idea. बोल रहा था, Can you teach me how to change into a fungus? 100 GB डाउनलोड कर। You want to transform into a fungus? मजाक नहीं, But we don't have time for growth. Genshin बोल रहा Nahita था is 100 a GB। god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. Alright. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. Alright. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. कसम से एक गेम यार, बुक पे देखना। xianyun मैंने चलाया, मेरे को अच्छा Really लगा। turned into a fungus. क्या कहते हैं, जाऊँ? It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. और ये हरामी पुल मार As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. मेरी आईडी पे। Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. Alright, good luck, और कौन है Nahita. स्ट्रीम कुछ पे? Let's go, नहीं। traveler. मेरी आईडी इस पे सुबह सुबह स्ट्रीम पे पुल मार दिया, हर्षु ने उधर पुल मार दिया, 80-78 पे लूज हो गया। उधर से एक बालक और आके पुल मार दिया, ध्रुवन्यो 10 ही पुल में निकल गया। क्या कहानी वो सेना यार अरे नाहिदा निकलेगी ना। हाँ भाई वही चलना मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Why my game is lagging? I guess I have to Why restart. is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. मुझे लगता है कैश जा रहा है, कैश यहाँ तो ड्राइवर Will be some chances. कंट्रोल Alt Shift B, विंडोज कंट्रोल शिफ्ट B। रिफ्रेश कर दिया।
पूरा चाइनीज एनिमे वाला फील दे रहा है अब ये। एंजल वेंजल घुसा दिया भाई एकदम। There's a fungus on patrol in the center there. It looks... Nana! ए भाई मेरी कर ले ज्यादा ही लार मार। कर ले टाइगरी बेटू बैठा। It seems they didn't notice me. It seems Betur. that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. वेटर को वो मिल गया आज, किताब मिल गया मतलब क्या कर ली? This is the वो spot. देख There are several चल fungi क्या देख here. I'll hide and wait for the traveler to लिया। catch up. क्या ऊपर देखना है? थोड़ा ऊपर जा। राइगिरी को देख रहा है क्या भेजा? इधर है भाई राइकरी को। चल इसके पे ऊपर जाने दे। ये क्या है? ये तो पिक्चर है ना और क्या? Ah, so this is the पिक्चर को one. ध्यान से देखना। Understood. देखो भाई इसमें ये वैसा क्या है रिलेटेड मतलब? चेनसॉ मैन। मैं नहीं देखा हूँ। अरे भाई क्या करना है? Prepare the right Nahida? जो भी है। What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. ये जगह सही है, पानी पे चल सकते हैं बिना फरीना के। कहाँ? It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. मैं तो खोला ही नहीं है। मैं अभी जाएगा पूरे। शाबाश। Apocalypse मैं मजाक नहीं ended. कर रहा। Go home. बोला शाबाश। Yes. अरे मेरा गेम ने अभी Unfortunately, खुला। I've forgotten where home गेम is. अभी खुला वो भी I हट was दिया। hoping you still remembered. I remember. Really? अरे भाई That's नेट great. फ्रेमवर्क भी हो जा अपडेट का वो Home. Dendro अपडेट नहीं। Dragon. इधर है ये। Dendro Dragon. Yes, the स्लेट तूने Dendro वो सुना है? Dragon. रुक जा भाई इधर मेरी फटी हुई है। I'm sorry, I just मेरे को got एक so भी करना है excited. जैसे भी करके। I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Paimon's confused. मछली Do फार्म you करनी है। mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? जब फ्री हो जाएगा तो Like बता दूंगा। Dvalin? Yes, they're both dragons, but a pep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. गाड़ी वगैरह। But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? मैं कार कर लेता हूँ। Because we live inside the क्या? Dendro Dragon. R3 मार देता हूँ लगना। पावर भी The चाहिए। Dendro Dragon. हाँ और क्या ही बस तो बाकी सब तो हो गया। Very big. Mountains, कंप्लीट हो जाए। water, trees. खत्म नहीं होता है। There is an entire world inside the Dendro आज Dragon's मैं body. जान कर देगा। The Dendro Dragon nurtured the earliest life ये वो भी forms आया है and क्या? protected us inside of itself. रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. Paimon's still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime.
Wait, then if that's the case, doesn't that imply that a pep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form, and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, मैं सुन के कर रहा, समझ के करना है इसको. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. मुझे नहीं समझना, समझे भी ना, इतना नहीं दे रही सुन के क्या फायदा, बस सही है. Your info is crucial to us now. देखो गेम से ज़्यादा मतलब Let's नहीं, wait for their reply जो again. चीज़ चाहिए वो लेना है. I know waiting can feel unbearable at a time like this. इनको बिल्ड करके रखना. चलते हैं BGMI कुछ I दिन explained तक. to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. वाला तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं. किधर से? कैसे? I worry. कैसे किधर से? I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us. No matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. टोनी सुपरस्टार होता तो ऐसा बोलता. अच्छा. बहुत सही. Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. बड़े लोग. अब तू देख बेटा, मैं दिखाता हूँ तेरे को. Plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. रात को खेलूंगा BGMI. 9-10 बजे के बाद. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. 9 से 12 या 10 से 12 खेलूंगा BGMI. सब रिकॉर्ड करके रखूंगा. Everyone looks like it's in a good mood and is waiting for another fungus. सब चोरी. सब चोरी.
इसलिए कह रहा हूँ नाहिदा, अब तू देख बेटा, तू बस देख। अच्छा, ओहो, इसीलिए बोलूँ खुला खुला सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब अपने काम का जगह हो गया ना। हम कभी बॉर्डर्स पे आते ही नहीं, कभी इतना घूमते ही नहीं है। यहाँ पे एक पौधा उगाना होगा, प्लांट सीड, फिर पानी मारना होगा। We planted all the seeds! It's time to handle the invading plant life! Flower flowers! It wasn't kidding when it said plants were invading! मेरा स्क्रीन शेयर देखना है कितना क्लियर आता है। अच्छा, तो फिर शेयर मतलब कितना क्लियर आता है बोले तो डिस्कॉर्ड पे कितना क्लियर हो सकता है, यही ना। Right now, emerge right here. नेट के ऊपर है, तुम्हारा तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों, बस अच्छा चल रहा था। That should be all of them. That wasn't too tough. क्वालिटी अभी दिखी थी ना ऐसा। अच्छा, तुम्हारा वाला स्क्रीन शेयर का अच्छा क्वालिटी था, लेकिन इनका नहीं था, पीसी वालों का नहीं था। शायद तुम्हारा फ़ोन से था ना, तो छोटा रेजुलेशन की वजह से हुआ। हर्षु स्ट्रीम कर रहा था, उसकी स्क्रीन ज़्यादा बेटर दिख रही थी 720p पे ही, और वही पीसी पे लाइक ध्रुविन्यो ने किया, सेनपाई ने किया, इतना बेटर नहीं दिख रहा था। Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. फट जाता है पीसी में, परफेक्ट आती है। हाँ, Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused now. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. टेक्सचर, तो 200 वाला अकाउंट मिला। आदि आदि वो डिफेंड गया नहीं है। हाँ, रुको रुको रुको, इसको जिंदा करना। कौन सा टेक्सचर बोल रहा है? अरे गेम का टेक्सचर नहीं, वो नहीं होता। अब भाई क्या 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 हुआ? जो सेकंड वाली अकाउंट उस पे रिटर्न आई है ना, और मैं अपने दोस्त को दे दिया हूँ। खत्म। क्या हुआ? और क्या हो गया? आज ही तो दिया अपने दोस्त को, पड़ा हुआ था, वो बोल रहा था कि उसके नाइदा नहीं निकली, डिलीट मारने वाला था जिनसे वाला। रुक मैं आईडी दे रहा हूँ, ले ले। हर्षु को भी चाहिए। काय किलो उसको चाहिए? ये क्या बदतमीजी, उसके पे नहीं निकला तो ग्राइंड कर सकता है ना, अभी तो चीज है उसके पास। भाई वो बेचारा AR-15 पे बैठा हुआ था, उसमें भी लूज मार लिया आईडी। छी भाई, वो भी किस समय 85 में जाकर लूज मारा, 84 या 85 पे। बोला भाई ले ले भाई आईडी तो छोड़। तो बस रहन दे, क्या ही करता फिर अब मैं। कुछ भाई अभी भी 300 पिंग आ रही है, मैं क्या करूं? 300 आ रही तो अपना भी तो 300 ही है। सभी का 300 ही तो है, अपना भाई 316। 600 से 300 जा रही और तो है। घिसना तो पड़ेगा, 80 पुल निकालने के तरीके बता 600 पे सकता हूँ। वॉट लगा के 300 जा रहे हैं। Conflicts between the two sides are destined to continue You are until a right. balance can be found. यार रीमॉर के बस तेरी बहन को नमन। काहे भाई, काहे इनको क्या ऑब्सेशन है भाई? As far as I know, Apep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it.
Maybe this is why a pep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. एक चीज़ तो है, हर एक आर्कोन के लाइक मतलब हर एक एलिमेंट का ड्रैगन को रेस्क्यू करना पड़ता है। हर सो घिसना पड़ेगा ब्रो, क्योंकि दूसरी आईडी पे जाकर फिर रेडन नहीं मिलेगी। एंड काजुआ फिर आने वाला है, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन रेडन अब तो नहीं आएगी। काजुआ कब आ रहा है? 4.5 या 6 पे, 5 पे ही आएगा ज़्यादा चांस। 5 पे। अब इन दोनों के बाद कौन आ रहा है? जाओ के बाद और इसके बाद ज़ान्योन और उसके नहीं था के जाओ और निको। दोनों नहीं तो नहीं निकाले। मेरे को, क्या बात करते हो? You really ऑन like स्ट्रीम them, निकाला था। don't you? ओ सॉरी, रिडन तो है मेरे पे। यस, नाहिदा निकल जाएगी बे, कह रहा हूँ खेलने को। तो अपने का तरीका थोड़ा कैजुअल। That's not what वो Paimon तरीका थोड़ा meant. कैजुअल है। मॉन्स्टर It's और just लेवे that छोड़ दो, You guys aren't actually the same माल species. कितना तो है मेरू मेरे फार्म पास कर दो, निकल जाएगा। हाथ है। गारंटी है ब्रो, निकल जाएगा। क्यों, चलो लूज हो गया तो एटलीस्ट पीटी तो है, मतलब बनाने के लिए अब फार्म करना है ना। ये थोड़ी ना कि हाँ पूरा किया फिर लूज हुआ, नहीं। टाइम है अभी। भाई ये क्या है? मतलब बहुत प्रीमोस अभी आने वाला है। लैंटन राइट भी आ रहा है इवेंट। कहीं से 10 पुल HEVC जेंसिन कोड, भी देगा ही। अरे वीडियो एक्सटेंशन मिलेगा क्या वही में? निकाल, HEVC कोडेक चाहिए मेरे को। निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा। रोज के कोडेक 5 तेरे को पुल, उससे मिल जाएगा वो। रोज के अरे 5 पुल वेंडर तो स्टोर इनफ से है, ही रोज मिल के 4 जाएगा। पुल से भी हो नहीं जाएगा। है, फ्री नहीं है बट रोज के 4 पुल, हर चाहे हर 2 दिन में 10 फ्री पुल नहीं मार है, दो, रुक एक रेगुलर तरीका 5 है। पुल कर करके मैंने जल्दी हो देखो जाएगा। करवाया वैसे था। इजी ये है, आ गया। टेंशन ले रहे हो आईफोन फालतू का। रिकॉर्ड करके रखे हैं, आईफोन वाले सब दिक्कत हो रहा है अब। डेली के 5 पुल और 2 दिन में हर 10 पुल करो, हर 2 दिन में। टिप्स मैं भाई दे रहा मैं हूँ। निकाल सकता हूँ जब अपने वर्ल्ड से, तो बात ही अभी नहीं तो है भाई। तुम्हारा तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बता दूंगा क्या करना है। इसका थोड़ा कैजुअल है, बता दूंगा। फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल। तो मेरे घिस दो, निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा। अरे बहुत ट्री Paimon व्री doesn't पड़े quite होगा भाई, उसमें बस understand. निकाल दो। डोमेन ही नहीं What किया it's अभी तक तो trying सब। to say is that as long as family members विंडो get स्टोर पे along नहीं है। well, then है लेकिन nothing पैसा else ले रहा है भाई matters. था। You place कितना मांग importance रहा on है? appearances, 0.992 but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Brother, Oh, Paimon gets it now. एक तरीका था Looks यार, can always तो change, so याद है। what's inside मैं of एक us बंदे को is more करवाया था, उसका भी नहीं important. चल रहा था, उसका पुराना लैपटॉप। डबल चैनल वाला लेगाटो मिलेगा, डबल चैनल ऑडियो वाला। अलगाटो के बिना कोई वीडियो कार्ड। रुक जा भाई। It wouldn't matter. Paimon would still be able to recognize you right away. Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a pet may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. HEIF image extensions देख। The crystal and the apocalypse. The apocalypse and HEIF image memories. extensions उस पे Lord होगा। of वो Dendro, फ्री वाला कोडेक do है। you still remember the prophecy? क्या देख रहा हूँ? HEVC क्या I माइक्रो do. उस पे ही है, What माइक्रोसॉफ्ट पे। about it? माइक्रोसॉफ्ट पे है। The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said एक टेलीपोर्टर that the खोल के दे। apocalypse is a part of us HEIF and that there is value image in extension है preserving तो। it. The rest of the family मेरे को did वीडियो not नहीं approve of HEVC its image opinion at the extension सेम ही time, चीज है। so it left. एक फ्री है एक Preserving the apocalypse?
Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. Chasm's on a chasm. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water's surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Oozing. क्या ही नखरे ने डेली के 5 भाई साहब It's over there! Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Hear me. Everyone hold hands. Right now, right here, right now. खत्म हो ही गया Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is coming out. Something's not right! What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment.
I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important! Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others, how long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! The Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry, that portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's heart of Oasis operates. सिर्फ 2 कैरेक्टर से तुम्हें लगता है कि हो जाएगा? फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ नाहिदा निकालो, 4.6 4.5 फिर सेव करना, फिर टी लूज़ होने का चांस तो रहेगा मे बी, बट सेव करना, फरीना चले जाना, फिर स्टिल एकदम पूरा इंतज़ार करना, जोंगली आने देना, जोंगली जब वेंटी शुरू होगा ना तो फिर जोंगली निकालना. The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. जेंशिन चल गया तो जेंशिन नहीं खेलूँगा बढ़िया से, या तो बीजीएमआई फिर से ट्राई करेंगे. बीजीएमआई चल गया तो जेंशिन अपन सिर्फ डिस्कॉर्ड पे खेलेंगे सब मजे के लिए, मतलब एक साइड गेम, सेकेंडरी गेम बोल के.
Mood swing, However, mood swing. if you are able to reactivate its दौड़ने के heart लिए of वो Oasis using the Fire Seed, नहीं करता, then the कोई मैंने Dendro नोटिस किया। Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the Fire Seed to save me? मैं यूज करता हूँ ना, हम करते What's हैं ना, wrong? ये भी इसमें यूज होता है। Never mind. It's not your fault. You didn't know. The Fire Seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the Fire Seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the Fire Seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. ये कमी को सेने ये दोनों ना इधर ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। वाह वाह वाह। तो अभी वो भी तो है। This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. Xianyun? It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true and it's very happy right now. Because its external form सेने doesn't और matter, Xianyun right? जो अभी आई है। Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. क्वाइट गुड है बट उसके वो थाइज वाइज जो मोटे मोटे हैं ना वो बड़ी, ये सब जो मोटे मोटे हैं ना हाँ अच्छी लगती है उस पर, बट स्टिल उतनी भी नहीं है। मीको पे क्या लग रहा है तुम्हें कि ये मॉमी है जिसके लिए मतलब निकाल सकते हो? मीको में क्या ओह लगी हुई है, कुछ भी तो अलग नहीं है। पता नहीं यार मीको में क्या तुम सबको दिखता है। ओह मॉन्स्टर कहाँ जा रहा हूँ? मीको में कुछ नहीं लगता। मीको इज जस्ट नॉर्मल मीको। एक सिग्नोरा अच्छी है लेकिन वो बैनर पे नहीं आई, वो कभी नहीं आएगी, मर चुकी है। आर्लेकिनो आएगी, आर्लेकिनो सॉरी आर्लेकिनो। It's not much further. Follow me. We're close now. It's look like my GF. ओह नहीं, मैं मीको को नहीं बोल सकता। किसको? सॉरी सिन्योरा को नहीं बोल सकता। एटलीस्ट कोई भी हो थोड़ी वाइफ मटेरियल सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर से भी किसी को भी अपना बना लूँ। वाह मीको ही दिख रहा है इधर भी। बिंदी के
बंदे के पास से ऊपर। अच्छा, मार्क एज फाउंड। तो क्या यहाँ पे 2 हैं? हाँ, एक खोपचे पे नीचे है। अमीको को बोल रहा शिनोरा। अच्छा अच्छा, एक शिनोरा। ओ मीको जस्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी है। आई सी। मेरे को फरीना एंड रेडन बहुत पसंद है। मेरे को फरीना का कपड़ा भी अच्छा, लाइक किधर से कुछ ज़्यादा दिखाने वाला कोई सीन नहीं है। ओह मैं नीचे, ओ शिट शिट शिट, ऊपर जा रहा हूँ। और फिर रेडन तो भाई ऑल टाइम फेवरेट रह चुकी है पास्ट से। सो आई लाइक इट। लुमिन स्टोन। सुमेरु पूरा फार्म करो, इजी इजी निकालो नाइदा, और बस टेक अ गुड रेस्ट। मेरे को एक पीटी बर्बाद लगता है ये। लुक वाइज ठीक ठाक है, बट एक पीटी बर्बाद है मेरे लिए। I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. दुबिचो तो मेरे को भी नहीं। 51 पे। We won't be able to see anything if we keep हाँ वो going तो that है। way. मेरे लिए फुरीना ठीक है, तुम मेरे को रखो। ओके ओके, नेक्स्ट पे ही कुछ ऐसा कैरेक्टर एक आ जाए। Something's over there. द डेंड्रो ड्रैगन। भाई साहब, डेंड्रो ड्रैगन पूरा We अच्छे से found दिखा it. था। A pep, the Dendro Dragon. I knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go? For only a moment? Foolish booer. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं, बट हो जाएगा। Paimon's never seen that before. थोड़ा समझाना होगा, It's बस our हो जाएगा। family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words,
They're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! They've given it their all just to survive. They're being drawn by the Fire Seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across to that? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Hey! Yoo-hoo! They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the Fire Seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the Fire Seed again. Correct. We cannot use the Fire Seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the Fire Seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go.
बात तो है भाई। अरे मीको क्या कर रही तू? पगला गई है बच्चे यार। लिनी इज गुड, बिल्कुल सुपर पावर है ब्रो लिनी। एक्चुअली आई लाइक द लिनी। उठाने से पहले मार्क लगाना ज़रूरी होता है कि हाँ हमने उसको उठा लिया है, ताकि हम खुद को फ्रेश कर पाएँ। नए वाले आईडी पे भी 6 मार्क कर दिए हैं, बाकी का देखते हैं। डोमेन डोमेन मतलब घर, रूम, ऐसा कुछ। मैं तो फुरीना विद वेपन कर दूंगा इस बार। क्योंकि उंगा बुंगा कोई भी कैरेक्टर नहीं जा रहे ना अपन। गेम जानबूझ के हर जगह फाइट इन्वॉल्व कराता है और ये बहुत बेकार चीज़ है। हर समय वायलेंस ही वायलेंस है इस गेम में, मतलब पूरा वायलेंस से भरा हुआ है। This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Paimon is getting sent in! Please keep everyone safe. And send us to the homeland.
I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Nashiri no. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Let's hurry. He might be just up ahead. और ड्रैगन के पेट में लिटरली एंड इसके पेट में ये सब कुछ है, कैसे बोल सकते हैं? पायरोमेलिनिकोराम गान्यो इरादे बदल रहे हैं। मैं सब इरादा बदल दूंगा तुम्हारा। What's that? चिंता मत करो। That पायरो में should be the आर्लेकिनो heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and Cryo it'll में restore a righteously pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it. We still need to find the traveler. All right, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it. I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Think! Come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. एक बात बोलो वर्षा, अगर यही लग रहा है ना और गलत करके बैठे हो, एक काम करो, नाहिदा निकालो नई आईडी बना के, ठीक है? 4.5 सेव करो, या काजुआ आएगा तो काजुआ निकाल लेना क्योंकि आने वाला है अब, ठीक है? फिर उसके बाद फुरीना निकालना 4.6 पे, ठीक है? 3 पीटी चलेगा ना कुछ भी करके,
उसके बाद कुछ मत निकालना जब तक ना कहूँ तब तक, क्योंकि सितंबर पे फिर आर्कॉन्स का रेरन आएगा, फिर रेडन भी आएगी, तो रेडन विद वेपन चले जाना। इतना भी मतलब रेडन को छोड़ देना इतना भी बुरा नहीं है अगर चाहो तो। एक पीटी के लिए आईडी छोड़ दोगे नहीं ना, तो फिर हल्का सा मेहनत करना है, आ जाएगा। एक ही तो कैरेक्टर तुम्हारे पे अभी बोल सकते कि है आयाटो, लेकिन बंदा गलत नहीं है यार, आयाटो भी मारता है बहुत। Not all eagles who have fallen to the ground can soar मेरा in भी the सभी sky वही once करता है। again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No! Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Aorus, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! इमोशन जग जाता है आर्कॉन्स की जो कि स्टोरी क्वेस्ट। To imagine such growth be achieved in such a short period of time. That's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. ओके, ये ओसिस है। तभी को अपन ड्रैगन को क्यों मारते हैं? ये तो ड्रैगन ही नहीं है। अभी ध्यान आया। ओए मिको, हेलो। बस कर यार। मरेगी की। ये ओसिस है जो कि डेंड्रो ड्रैगन से निकला हुआ है। एंड इसके बाद डेंड्रो ड्रैगन समझ जाता है। Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Wait, hear me. Emerge, right now. I see everything. Emerge, right here. Show them. Hey! Strike a pose! Right now. ओह माय गॉड, मीको की कुछ पावर नहीं है। रिडन की एक बस्ट पे वो खाली हो जाता था, उतना ही ऑटो भी देता है। चिंता मत करो।
Emerge. Time to shine. Barbados, guide us. Committed to memory. Come on out. Power of Purina. Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Then let us know that you're alright. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would ज़्यादा be kindled इमोशन से once भरे my हुए होते power हैं सारे returned to क्वेस्ट me. ये स्टोरी वाले बेसिकली एंड आर्कॉन पे However, लास्ट पे what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. बोलती बहुत है annoying है Who can put up with you? I गुस्सा respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. मैं क्या 2 मिनट में Sand पलट गया dunes arose where there was only forest. And it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. It's a Paimon. At that time, I still harbored deep regrets.
By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow them until the end of my time. You really are insane. When Alachmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed, and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. मज़ा आ गया। अब खाना खा के आते हैं, बात थोड़ा सा और सुनते हैं। Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? Let's go. Wait, अब जाता हूँ खाना खाने. Bye bye.